It has been on the agenda of the UN Security Council since 1948 under the Indian-Pakistan question. The UN Security Council resolution on Jammu and Kashmir affirmed the right of the Kashmiri people to self-determination. Regrettably, these resolutions have not been implemented during the last 7.5 decades. Instead, the current Indian government is bent upon consolidating its occupation of this internationally recognized disputed territory through a series of legislative and administrative measures. Contortions, convulsions, outright lies, and brutal use of indiscriminate force would be a more appropriate way of describing these reprehensible measures. Mr. Speaker, history cannot be undone. It was India that took the Jammu and Kashmir dispute to the United Nations. One of India's founding fathers and its first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, is on record to assure the Kashmiri people multiple times of a plebiscite to determine their free will. In his letter of 21st November 1947, addressed to the Prime Minister of Pakistan, he categorically stated that Kashmiris should decide the question of accession by plebiscite or referendum under international auspices such as those of the United Nations. The subsequent Indian governments also acknowledged Jammu and Kashmir as a dispute. How can India's current leadership renege from these promises now? India must honor its long-standing and solemn commitment to the United Nations, to Pakistan, and above all, to the Kashmiri people. Regarding the plebiscite, the commitments under UN Security Council resolution. This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair Removing Formula. Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream. To the Kashmiri people at this critical moment in the history of their struggle against foreign subjugation in their legitimate and freely chosen legislature. I'm here to express solidarity with them in the wake of a grave injustice. 3 days ago, in a decision that was politically motivated rather than grounded in law, the Supreme Court of India validated the Indian government's illegal and unilateral measures of 5th August 2019. This unjust verdict was delivered by the apex court of the world's so-called largest democracy. In fact, the title of the world's largest democracy is a misnomer. Instead, India should be called the world's largest hypocrisy, where hollow slogans of secularism, democracy, and diversity are raised to cover up caste-based societal operation, systematic intimidation and marginalization of minorities, state-sponsored killings and terrorism, and illegal occupation of people and territory. Ironically, the self-proclaimed largest democracy of the world is afraid of granting the democratic right of a plebiscite to ascertain the will of the Kashmiri people. Mr. Speaker, India's unilateral and illegal measure of 5th August 2019 and a series of subsequent steps have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of the Indian illegal occupied Jammu and Kashmir. These measures constitute a flagrant violation of international law as well as the UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. They remain a matter of grave concern as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered community in their own land. Deplorably, India's Supreme Court has endorsed these steps. Mr. Speaker, the successive Indian actions in illegal Indian occupied Jammu and Kashmir constitute a breach of the UN Charter, UN Security Council resolutions, and international law, including the 4th Geneva Convention. Amongst others, the UN Security Council Resolution 122 of 1957
accepted by India, unambiguously declares that final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations. The resolution further provides that any action by the erstwhile India-imposed Constituent Assembly of Jammu and Kashmir to determine the final shape and disposition of the state would not constitute a disposition of the state in accordance with the said principle. The Indian government's actions of 5th August 2019, endorsed by its Supreme Court, are in a clear violation of these provisions. Evidently, India's administrative, political, and legal measures, including a series of sham elections, Article 370 of its constitution, abolition of this article in 2019, and now the Indian Supreme Court's verdict are mere tools to consolidate its occupation. Domestic legislation and judicial verdicts cannot absolve India of its international obligations under the UN Security Council resolutions. In the eyes of international law, any process subservient to the Indian Constitution cannot be invoked to determine the final status of Jammu and Kashmir. On the one hand, India has a grandiose vision of its place in the Committee of Nations. On the other, it implements a grotesque plot to subjugate foreign people and territories. It wishes to become a permanent member of the UN Security Council. However, its leadership takes pride in trampling upon international law and the UN Security Council resolutions. These contradictions, reinforced by the ideology of Hindutva, should serve as an eye-opener for the international community. Mr. Speaker, it is an established fact that Jammu and Kashmir is an international dispute. The Indian government or its judiciary have no right to take unilateral measures against the will of other parties to the dispute, that is, the Kashmiri people and Pakistan. Now, verdict of any Indian court can stifle the aspirations of the Kashmir people. They had rejected India's illegal occupation in 1947. They also reject the actions of 5th August 2019. The judgment is politically motivated. This legal manipulation is an old tool in the hands of occupying powers, aimed at creating ground realities, feigning hatred for popular support, and finally seeking legal validation through puppet courts. We and the Kashmiri people reject all this. Mr. Speaker, today in occupied Jammu and Kashmir, fear reigns, lives are extinguished, and rights are trampled upon with impunity. We condemn the consistent and premeditated assault on the demography of the Kashmiri people, the integrity of their land, and repeated attempts to rob them of their unique religious and cultural identity. Mr. Speaker, a Hindutva-driven leadership is bent upon devastating communities and perpetuating subjugation and occupation of Jammu and Kashmir. They are targeting defenseless Kashmiri men, women, and children. The dream of breaking the will of the brave Kashmiri people, like many colonial rulers and radical occupiers throughout history. They are mistaken. The Kashmiris refuse to be enslaved. They have inscribed the crimson history of their resistance with their blood. Let me at this juncture pay homage to the early martyrs of the Kashmiri struggle, the tens of thousands valiant souls of Jammu. Their massacre in 1947 inspires our strong resolve in Pakistan to stand by our brethren in their just struggle. Mr. Speaker, during the last 34 years, more than 96,000 Kashmiris have been killed. Thousands of women have been subjugated to molestation and harassment. Pellet guns have been used as a weapon of mass blinding.
Thousands of others have fallen victim to enforced disappearances. All these brutalities must end. The international community must hold the perpetrators of these excesses to account. These human rights abuses are well documented by a number of international bodies, including through 2 reports of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights issued in 2018 and 19. Today, I ask the world, when will its collective conscience awaken? For how long will the people of Kashmir continue to make sacrifices? For how long will their voices be muzzled? For how long will their leaders remain arbitrarily detained? And for how long will they continue to suffer torture and extrajudicial executions? The state-sponsored terrorism must come to an end. Earlier this year, the Office of All Parties Hurriyat Conference in Srinagar was sealed. But can that flame in the hearts of Kashmiris be extinguished by confiscation or destruction of the structures of brick and mortar? The Indian authorities snatched the dead body of Sayyid Ali Gailani and did not allow his family to attend his funeral. Why were they afraid of a dead man? This brave man stood as tall as the Himalayas against the cruelty of Indian occupation. He lives in the heart of Kashmiris and continues to inspire their dream of freedom. A few months ago, the Indian authorities have sought the death penalty for Mr. Yasin Malik. Despite frail health, he continues to be dragged through sham trials and sentenced in politically motivated cases. Why does India want to stage his judicial murder? Mr. Speaker, notwithstanding widespread human rights abuses, India has failed miserably to dampen the spirit of Kashmiri people. Generations after generations, their longing for freedom is as alive as it was 7.5 decades ago. I wish to remind the Indian leaders that unilateral steps in Jammu and Kashmir can neither accord legitimacy to their occupation nor suppress the true sentiments of the Kashmiri people. Gimmickry cannot replace legitimacy. The gerrymandering of electoral constituencies, issuance of domicile certificates to outsiders, and addition of temporary residents to the voters list are part of a well-thought-out political landscape. Pakistan and Kashmiris outrightly reject these illegal and unilateral steps. Mr. Speaker, India's charade of normalcy in Kashmir is a grotesque distortion. Militarization, censorship, and rampant abuses are the hallmarks of this brazen occupation. Normal areas do not need deployment of hundreds of thousands of armed troops. Normal areas neither remain under military siege nor are governed by the president's rule and draconian laws. In normal areas, there are no unidentified graves or half-widows. In normal areas, people are free to travel abroad, and journalists, both foreign as well as local, are free to travel and report. The occupied Kashmir remains deprived of these signs of normal life. How could one claim that normalcy had returned to Kashmir? How can Kashmir develop in an environment of fear and intimidation? Mr. Speaker, Kashmir is Pakistan's jugular vein. The word Pakistan is incomplete without Kashmir. The people of Pakistan and the people of Kashmir are bound by a unique affinity based on geographical proximity, shared history, and commonality of faith. We share joys and sorrows. Pakistan cannot remain indifferent to what happens in Jammu and Kashmir. It is a party to the dispute. Kashmir runs in our blood. That is why Jammu and Kashmir dispute
remains an important facet of Pakistan's foreign policy. We are duty-bound to play our role in the just and peaceful resolution of Jammu and Kashmir dispute, in accordance with the UN Security Council resolutions and wishes of the Kashmiri people. Across the political divide, the entire Pakistani leadership stands united to support the Kashmiri people's just struggle for realization of their right to self-determination. Successive generations of Pakistani people have steadfastly supported the Kashmir cause. We shall continue to do so. Mr. Speaker, Pakistan has always wanted good neighborly relations with India. However, durable peace in South Asia remains contingent upon the settlement of Jammu and Kashmir dispute. We have consistently advocated constructive engagement and result-oriented dialogue to resolve all outstanding issues, including the core issue of Jammu and Kashmir. However, India's unabated hostility and retrogressive actions have vitiated the environment. The onus, therefore, remains on India to take the necessary steps to create an enabling environment conducive for a meaningful and result-oriented dialogue. Mr. Speaker, any attempt to label the long-standing struggle of the Kashmiri people as terrorism is an egregious distortion of reality. It is vital to recognize the profound disparity between genuine aspiration of freedom and the blanket accusation of terrorism. These excuses must not serve as a pretext to delegitimize earning for self-determination among occupied people. Mr. Speaker, the Indian leaders are making a number of belligerent statements about Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. Only a few days ago, the Indian Home Minister staked a claim over Azad Jammu and Kashmir while addressing the Indian Parliament. Notwithstanding Indian military and political leaders' rhetoric, Pakistan has exercised maximum restraint. Let there be no misconception that Pakistan would yield to any form of threat or intimidation. We stand resilient in the face of challenges, holding firm to our principles and commitment to safeguarding our sovereignty and interest. Yet our real strength lies in our perseverance, diplomacy, and commitment to dialogue, not in aggression or conflict. Above all, truth is on the side of the Kashmiris and Pakistan. Mr. Speaker, I appeal to all men and women of conscience to urge India to desist from taking unilateral steps to further consolidate its occupation of illegally Indian-occupied Jammu and Kashmir. Revoke its action of 5th August 2019 and the subsequent steps. Provide solemn assurance that it will not change the occupied territory's demographic composition and not allow non-Kashmiris to acquire property or residency in Jammu and Kashmir. Halt its egregious human rights violation. Repeal its draconian emergency laws and withdraw its heavy military presence from Kashmiri cities, towns, and villages. Provide unhindered access to UN, OIC, human rights organization, and international media to investigate and report on the situation in occupied Jammu and Kashmir. Implement fully the relevant UN Security Council resolutions and allow the Kashmiri people to freely exercise their right to self-determination through a UN-supervised plebiscite as was promised to them by India, Pakistan, and the international community. Mr. Speaker, before concluding my remarks, I salute the courage of the Kashmiri people and pay rich tribute to the martyrs. I owe my sincere sympathies to the population of Azad Kashmir, living close to the line of control, who have suffered enormous loss of life and property in the past due to India's aggressive and deliberate shelling.
I want to reassure our Kashmiri brothers and sisters of Pakistan's steadfast moral, diplomatic, and political support. We have stood with them over the course of last 7.5 decades, and we shall continue to stand alongside them in their just struggle for realization of their right to self-determination. We genuinely wish that our kin across the line of control also enjoys the same rights and freedoms that are being enjoyed by the people on this side. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का जो आज इस ऐवान में मुझे बख्शी और मेरी तवस्सुत से पाकिस्तान के ऐवानों में और पाकिस्तानी अवाम में अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। पाकिस्तान वकील है, लेकिन इस मुकदमे में उसको अपने आबा व अजदाद के हिस्से में जो जायदाद आई है उसका मुकदमा लड़ रहा है। ये मेरी अपनी ज़मीन का मुकदमा है, ये मेरे अपने लोगों का मुकदमा है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता चलूँ कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी के ज़हन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले, वो कश्मीर में भी दूर कर ले, वो पाकिस्तान में भी दूर कर ले, और वो श्रीनगर और बारामूला में भी दूर कर ले। मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहां नहीं बैठी है, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला और श्रीनगर में बैठी है। जो एजाज, जो कुर्बानी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों ने दी है, हम सदियों में उन एहसानात को नहीं भुला सकते। हम सब आपके मकरूज हैं, हमारी आवाज, हमारी सदा सुन ले। कर्जा हमारी तरफ है और आपका है। उनकी बच्चियां रेप का सामना कर रही हैं, उनके जवान इनफोर्स डिसअपियर हो रहे हैं। वो हैं असल लोग, वो हैं असल मुजाहिद। जब मैं यहां आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे शहीद वानी याद आ रहे थे। जम्मू के शोहदा से लेकर ये मशले राह वानी जिस अंदाज में लेकर चले, ये कश्मीर की आज़ादी के ज़ामिन है। पाकिस्तान अपने कोर इंटरेस्ट से कभी पीछे नहीं हटेगा। हम बिल्कुल अमन चाहते हैं, but peace with justice. We can't and we don't want peace with injustice. And we will not allow to establish a peaceful order based on injustice principles. हमारी भी नजर है छत्तीसगढ़ से लेकर आसाम तक। हम भी इन नारों पे और इन जो हिंदुत्व के आइडियोलॉग्स के व्यूज हैं कि पहले कसाई फिर ईसाई, जो कुछ गोवा में होता है, ईसाई दुनिया को उस पर नज़र रखनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जिस अंदाज में रॉ की बेलिजरेंस वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ जा रही है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए एक वेकअप कॉल है। जागते उनकी मर्जी, नहीं जागते उनकी मर्जी। हमने तो इस नाज़ी फैशिस्ट सोच का मुकाबला किया है 7 दहाइयों से। हमारा हिंदू मज़हब से न कोई झगड़ा है, न हमारा हिंदू मज़हब पे कोई इजारादारी कायम करना चाहते हैं। हमारे पास अपने 20-30% सिंध के अंदर हिंदू पॉपुलेशन मौजूद है और वो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारी सोसाइटी और रियासत में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है,
और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। ये छोटी अक़वाम की लड़ाई है, ये मुख्तलिफ़ अदियान की लड़ाई है, ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स की लड़ाई है। 200 साल से इस खित्ते के लोग लगे हुए हैं कि किसी न किसी शक्ल में रेजिस्टेंस का सामना किया जाए, रेजिस्टेंस के ज़रिए उसका ऑक्यूपेशन का सामना किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है, ऑक्यूपायर की शक्ल बदलती रही है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट? ओके आई बी रेडी। गोल्डन पर्ल अर्जेंट फेशियल 10 मिनट में लो पार्लर जैसे फेशियल का ग्लो। गोल्डन पर्ल अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। और वो भी घूम कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। विगोरिन कॉलिक ड्रॉप्स नन्हे बच्चों में गैस, पेट दर्द दूर करने के लिए मौसर, क्योंकि विगोरिन कॉलिक ड्रॉप्स है समझदार माओ का पहला इंतखाब। A product by BMA Pharma. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन E का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। लासानी का जोशाना प्लस मलाठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, गर्मी सर्दी में यकसा मुफीद। लासानी का जोशाना प्लस मलाठी। निसा कोलेजन बूस्टर बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, फर्मर एंड स्पॉटलेस। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। तैयार रहो अगर करना है ग्लो। मंजिल के रास्ते पर धूप से ना डरो, धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। मुझे आगे आगे बढ़ना है, धूप में भी हम हैं तैयार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। निसा कोलेजन बूस्टर बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, फर्मर एंड स्पॉटलेस। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। कोकोनट और विटामिन्स की पावर लिए ब्लैक रोज कलर सुप्रीम। मेरे लिए परफेक्ट बर्गंडी, आई लाइक डार्क महागनी। और मेरे लिए लाइट चॉकलेट ब्राउन। ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स। विगोरिन कॉलिक ड्रॉप्स नन्हे बच्चों में गैस, पेट दर्द दूर करने के लिए मौसर, क्योंकि विगोरिन कॉलिक ड्रॉप्स है समझदार माओ का पहला इंतखाब। A product by BMA Pharma. Meet new light and glow BB cream. Hydrates, skin को brighten and even tone करे, oil absorb करे, shrinks pores और दे full coverage makeup look all day. Light and glow BB cream. कराची से खैबर तक बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। निसा कोलेजन बूस्टर बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, फर्मर एंड स्पॉटलेस। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। गोल्डन पर्ल बॉडी बटर, टोटल स्किन थेरेपी, बनाए स्किन स्मूथ और क्रीमी सॉफ्ट। गोल्डन पर्ल बॉडी बटर, लव योर स्किन। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थे कोई भी स्टाइल करो पिक। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन।
कोकोनट और विटामिन्स की पावर लिए ब्लैक रोज कलर सुप्रीम। मेरे लिए परफेक्ट बर्गंडी, आई लाइक डार्क महागनी, और मेरे लिए लाइट चॉकलेट ब्राउन। ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आओ, मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले, फिर काटे, फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। सिर्फ 10 मिनट? ओके, आई बी रेडी। गोल्डन पर्ल अर्जेंट फेशियल, 10 मिनट में लो पार्लर जैसे फेशियल कर लो। गोल्डन पर्ल अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन। निसा कोलेजन बूस्टर बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, फर्मर एंड स्पॉटलेस। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन। दुनिया बोल है, व्यापार बोल पाकिस्तान। अब पता चला तज्जिया ऐसे नहीं चलेगा, अब बात होगी, बस बहुत हो गया तब्दीली। बोलो जनाब, सिर्फ बोल न्यूज। इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी सूद स्याह प्लासम रखी लेके आना। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप में शामिल कुदरती अज्जा जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाए। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप है समझदार माओ का पहला इंतखाब। A product by BMA Pharma. I have Nisa Collagen Booster जो रिवाइव करे आपकी स्किन को डे बाय डे। Nisa's exclusive regenerative formula जो बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, firmer and spotless। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा with Nisa Collagen Booster। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप में शामिल कुदरती अज्जा जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाए। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप है समझदार माओ का पहला इंतखाब। A product by BMA Pharma. मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी हैं। कश्मीरियों की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला दिया। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का इख्तियार दिया। इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे, इदारे नहीं लोग बुरे होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस में रिमार्क्स। कहा, तबाही इस वजह से होती है कि शख्सियात की बजाय इदारों को बुरा भला कहते हैं। हुकूमत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ कर दिया। फैज़ हमीद और दीगर को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त गुजार को 1 रोज़ की मोहलत, समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की खुली अदालत में समाअत की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ओपन समाअत की मंजूरी मुतफ़िक़ा तौर पर दी। तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्त से फरार की मनसूबाबंदी है। शहबाज शरीफ कहते हैं इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्त से फरार की मनसूबाबंदी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। फैसल करीम कुंडी बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होने देगा। 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से भरपूर तैयार है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत पीर तक मुलतवी। तमाम दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल। दरख्वास्त गुजार राजा ताहिर अब्बासी ने इलेक्शंस कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा, कितने वोट कास्ट हुए कहीं नहीं बताया गया। मेंबर सिंध निसार दुरानी बोले, जब इलेक्शन ही बिला मुकाबला हुए तो वोट कैसे डाल सकते हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। पुलिस ने GPO चौक से नक्शे अमन के तहत गिरफ्तार किया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल।
निजकारी में गैर ज़रूरी ताख़ीर ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी। सदर ममलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी किया। ऑर्डिनेंस का मकसद निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में लाना है। हाई कोर्ट्स के इख्तियारात निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल को मुंतकिल। सारा इनाम के कातिल शाहनवाज को सजाए मौत का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुना दिया। 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। फर्द जुर्म आयद होने के पूरे 1 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मुजरिम की वालिदा समीना शाह को बरी कर दिया। फातिमा कत्ल केस वजीर सेहत सिंध का इंक्वायरी रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। साद नियाज ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कमेटी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के इकदामात हल करने में नाकाम रही। DNA मस्बत आने पर लेबॉर्ट्री ने अफसरान को मतला करने में कोताही बरती। मोरो में जरदारी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। ज़राई ज़मीन के तनाज़े पर इलाका फायरिंग से गूंज उठा। 2 अफराद हलाक, 10 से ज़ायद जख्मी। मोरो अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। तैयार रहो अगर करना है ग्लो। मंजिल के रास्ते पर धूप से ना डरो, धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। मुझे आगे आगे बढ़ना है, धूप में भी हम हैं तैयार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। जब मिले HD वीडियो कॉलिंग, HD फोटो शेयरिंग, 1000 मेंबर ग्रुप्स और सोशल चैनल्स, तो फिर सब कुछ इससे बोलो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल पाकिस्तान। मैं हूं आमना खटाना। वक्त हुआ चाहता है इलाकाई हालात से आगाही का। नगर नगर की खबर लिए बोल पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे 12 फुट लंबा नोटों का हार, कैदी बने रजाकार, बच्चे तफरी से महरूम। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से सिब्बी के अवाम के लिए सेहत के शोबे में तोहफा। टीचिंग हॉस्पिटल में ICU वार्ड्स, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के क़याम से शहरियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात की सर्विसेज मुयस्सर होंगी। टीचिंग अस्पताल सिब्बी में निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की काविश के बाइस कोविड-19 के मखसूस फंड से रेडियोलॉजी, 10 बेड पर मुश्तमिल ICU और गायनकोलॉजिस्ट वार्ड्स की तामीर समेत पैथोलॉजी और ऑक्सीजन मशीनों की तनसीब का काम जारी है। प्रोजेक्ट की तकमील के बाद सिब्बी डिवीजन के शहरियों तक सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर होंगी। 31 ICU, 16 पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, 15 रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, 8 ब्लड बैंक, ये इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे सूबे में बन रहे हैं। और सिब्बी में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, 10 बेडेड ICU है, पैथोलॉजी एंड ब्लड बैंक है और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ये इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के 2 कंपोनेंट्स हैं। सिविल वर्क कंपोनेंट CNW डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है और गाइन इन ऑप्स डिपार्टमेंट इंशाल्लाह फंक्शनल होंगे। बलूचिस्तान के 31 अजला में अस्पतालों को अपग्रेड करके सेहत की बुनियादी सहूलियात से लैस किया जा रहा है। सिब्बी के टीचिंग अस्पताल को सूबे के मेयारी और बेहतरीन अस्पताल की तरह अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके बाद शहरियों को उनकी दहलीज पर सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर होंगी। यहाँ पर हमें 4 कॉम्प्रिहेंसिव से बिल्डिंग्स प्रोवाइड की। इन बिल्डिंग में जो पहली बिल्डिंग है वो ICU की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग आपके पास रेडियोलॉजी की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग आपके पास एक्सरे डिपार्टमेंट है, लेबॉर्ट्री डिपार्टमेंट है जिसमें आपके पास ब्लड बैंक भी मौजूद है और एक कॉम्प्रिहेंसिव गायनी की बिल्डिंग मौजूद है। ये 4 बिल्डिंगें जो हैं वो आवाम की ज़रूरियात के पेश नज़र डिज़ाइन की गई हैं
और किसी ऐसी सिचुएशन के लिए जहाँ पर किसी किस्म की इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है और मरीज़ को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये 4 बिल्डिंग डिज़ाइन की गई। इलाज की गर्ज से कोयटा और सक्खर जाने वाले मरीजों को टीचिंग अस्पताल सिब्बी में तिब के चारों शोबों की अपग्रेडेशन के बाद यकीनन उन्हें मुफ्त और मेयारी तिब्बी इमदाद की फरहमी किसी नेमत से कम न होगी। मोरो तहसील में माजूर बच्चों को स्कूल के लिए बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट की कमी का सामना है। बच्चों को मजीद किन मुश्किलात का सामना है, वो तालीम किस तरह से हासिल कर रहे हैं, ये जानते हैं तैमूर अहमद राजपूत से। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम जो है मोरो शहर तहसील के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में जो है स्पेशल चाइल्ड जहाँ पर पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर मौजूद है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। इनके क्या क्या मसाइल हैं और कैसे इनको तालीम मुहैया की जाती है, इस हवाले से हमारे साथ एक टीचर्स मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बच्चों को हम जो है सिंधी भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, ड्राइंग करवाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब इशारे के तौर पर हम पढ़ाते हैं। कुछ हम जो है चार्ट से उनको फॉलो करते हैं, कुछ हम जो है इंटरनेट पर ये चीज़ें देखते हैं इस हिसाब से। और सहूलत तो हर चीज़ की, खाना पीना भी बच्चों को मिलता है, आउट पिक एंड ड्रॉप हर चीज़ मिलती है, लेकिन सिर्फ ये है कि बिल्डिंग हमारी जो है अपनी नहीं है। हम चाहते हैं कि बिल्डिंग भी हमारी अपनी हो, हमारा अपना स्कूल हो। स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बच्चे हैं, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, उन्होंने अपनी तर्ज पर जो है बच्चों को जैकेट्स शूज़ वगैरह मुहैया किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट से कि सर्दियों के शुरू होते ही स्पेशल जो बच्चे हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है उनको जैकेट्स शूज़ वगैरह भी जो है गवर्नमेंट की जानिब से मुहैया की जाए ताकि जो है बच्चों की तालीम जो है आगे बढ़ सके। जी ज़राई यूनिवर्सिटी सब कैंपस बूरेवाला में दूसरी सालाना एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। एक्सपो में तलबा और तालिबात को ऑनलाइन रोजगार से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जमील भट्टी। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बूरेवाला कैंपस में दूसरी सालाना एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात को अभी आपको बराह रास्त दिखाते हैं। मियां नवाज शरीफ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने मुनासिब ख्याल किया कि बराह रास्त आपसे बात करूं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं जिसने मुझे आखिरकार झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू किया। मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा, हर तरह की मुश्किलात में मेरे साथ खड़े रहे और एक लम्हे के लिए भी मेरे ख़िलाफ़ इस झूठे प्रोपेगंडे पर यकीन नहीं किया। आपकी दुआओं और आपके साथ ने मुझे हमेशा बहुत हौसला दिया। आज आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरी जमात का हर रुकन, हर